Good afternoon, students. Yes, so yesterday we completed concurrency. We saw concurrency control schemes, right? Why we need to use this types of schemes and what is log-based protocol, right? And yesterday I said you that I will ask any one of you to explain concurrency control scheme, why it is needed and why we are using it. Okay, so yeah, let's start. Neerav, Neerav, am I audible to you? Yes, ma'am. Neerav, what is concurrency control scheme? Ma'am, I was absent the last lecture. Yesterday you were absent? Yes, ma'am. Okay. Kunj, Kunj, am I audible to you? Jay Makwana? Jay Makwana, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Jay, what is concurrency control scheme? Explain this. Sorry, ma'am, I forgot. You forgot we did this yesterday. I said I will ask. Yes, ma'am, but I forgot. Okay. Mehak? Yes, ma'am. Mehak, what is concurrency control scheme? It will allow more than one transaction at a time for a one account. Okay. Why we need concurrency control schemes? If we are running a institution's account, then it may happen that more than one transaction could be happen in the same time. So in such cases, we need concurrency. But why? What if we don't use it? Um, it will uh, it will take more time to have a same number of transaction to be held uh, if we do not have a concurrency transaction, and if we have concurrency transaction, the number of people can be more. Okay. Why we need to use concurrency control is if two people are accessing database at the same time, any data, same data item at the same time. And if both of them have the permission to write the database, at that time it will conflict, right? One person's instruction will be replaced by some other person's instructions. So they won't get the correct result, right? We saw the example. Do I need to repeat it? Do I need to repeat? So whenever there is any question that why concurrency control is needed, at that time, concurrency control scheme, at that time you have to answer this few points, okay, which we saw yesterday. To resolve read write and write write conflict, to apply isolation through mutual exclusion, and it will also control the interaction among the transaction, which transaction is going to access first. Okay. Anyone feel that I need to repeat it? Okay, fine.
What is this log-based protocol? Anyone? What is log-based protocol? Jay Makwana, do you remember this? Jay Makwana? Hello, 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 ma'am. Jay, am I audible to you? Hello, ma'am. There are two types: exclusive and Jay, shared what lock. is When we log-based apply protocol? exclusive and when we don't do the unlock this, so we don't go in shared mode. What is exclusive and what is shared? Hello, hello, ma'am. Hello, Rupali? hello. Yes, ma'am. Rupali? Yes? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Rupali, what is shared mode and what is exclusive mode? In shared mode, we read the data, and in exclusive mode, we change the data. Read and write. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Yeah, in exclusive mode, we can write and read the data, and in shared mode, we just read the data. Okay, this we saw yesterday. Anyone can explain this compatibility matrix? Ramesh? Yeah, ma'am. Yeah, Shruti, please. Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Shruti, can you explain this compatibility matrix? Log-based Yes, ma'am. matrix? When yeah, Yeah, correct. when both the data items are in the shared mode, then uh, then
Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Sorry, due to some network issue, I left the meeting. Fine. Anyone wants to explain this thing? Ruchi, I think you were answering. Yes, ma'am. When when both the data types are in the shared mode, then and then only the lock is compatible, and When both the in the other transactions are not cases, completed. sorry, in transactions, and in the all other cases, the lock is not compatible. Yeah, the lock is only compatible if both the transaction wants to use this data item on shared mode. If any one of them are going with exclusive mode, then it is not compatible. Okay. So here yesterday we saw this example that your unlock B was too early, because of which we got incorrect answer. Okay. When we placed unlock B after ending right A, then we got the correct answer. Okay. Then we saw pitfalls of lock based protocol. In pitfalls of lock based protocol, what we saw deadlock. What is deadlock? If one person is waiting for the other to finish the transaction and that person is waiting for some other person to finish the transaction, in this case deadlock will occur. Every transaction have to wait for each other. Okay, you will not find any solution. Everyone have to wait for each other. At in during this case, you can do one thing. You can release the lock by roll baking your transaction. Okay. See, if this one would release the lock A, then this can complete transaction easily. If this will release the lock B, if here unlock B would be there, then it can finish the transaction and then it can use. Then in that case, both the transaction will complete its uh, transaction process. Okay. But here, since authority B would release the lock, none can complete the transaction. It goes to deadlock state. Okay. Now, the potential for deadlock exists in most locking protocols. In most of the locking protocols, you will find deadlock will occur. Okay, and it is necessary evil. Why we are saying necessary evil? Because we do not unlock the data item in shared or exclusive mode. We are not allowing someone else. Okay, that is good for our concurrency. That is good for our concurrency, but it is not good for transaction because they have to wait for each other. Okay, so starvation concurrency control manager is badly designed. What is the meaning of starvation? In English word, starvation means the person who has not had their food for long time. Right? Who is just waiting and waiting. Okay, we are using this term starvation. Okay, so here in concurrency control in our log-based protocol, what starvation means? That means that each transaction has just wait for another transaction to release the lock or release the resources. They cannot complete their procedure without it. Okay, so transaction is possible. It is badly designed. Concurrency control manager is badly designed. Okay, so a transaction may be waiting for an X lock, exclusive lock, on an item once of other transaction requests and are granted the same data item. Now see, there are some possibility of starvation here. Why? Because if some other data item, if some other transaction are using lock S, shared lock in some data item, and now someone else want to use that same data item with exclusive lock, then they have to first wait. Why? Why they have to wait? Because exclusive lock will not allow you will not allow any other transaction to read or to write. Exclusive lock will not allow them. Okay, so at that time starvation will be possible. That means that lock X need to wait until lock S is released. Okay, the same transaction is repeatedly rolled back due to deadlock. Now if some deadlock occurs there, then same transaction need to be repeatedly rolled back. They need to kill their procedure. Okay, concurrency control manager can be designed to prevent starvation. Here
we can say that concurrency control manager will be designed to prevent starvation, to prevent this kind of situation where starvation will occur. Concurrency control manager will be designed. Okay. Now see, we can avoid starvation of transactions by granting locks in the following manner. These are few steps by which, by applying these steps, we can say that starvation can be avoided. How it can be avoided? When a transaction TI requests and lock on a data item queue on in any mode means in exclusive mode, or you can say in shared mode. If some transaction want to access some data item in any of the mode, the concurrency control manager grant the lock provided that there is no transaction holding a lock on queue in a mode that conflict with M. Now see, we know that exclusive will conflict with exclusive, or exclusive will conflict with shared mode. So we will only provide transaction, we will only grant the request of lock if both are in shared mode. Right now, if I am working in shared mode, my transaction is going in shared mode. Can if you want to apply for share mode, then it is okay. Okay. If you want to apply for exclusive mode, then it is not okay because I am working in shared mode. Okay, it is not compatible. So if it is compatible, then and only then we are going to grant the permission. Then second condition is there is no other transaction that is waiting for a lock on queue that made its lock request before TI. Now there should be no transaction other than that particular transaction which is requested. Okay, that it should wait. For example, if I am waiting for data item Q, access data item Q, and if you are your next procedure, next operation, then you will get that log and I will not get that log. That is not possible. Okay, you will get the log if and only if some other transaction is not waiting for the log. If I am not waiting for that log, then and only then you can access that. ओके, एटीएम की लाइन में जाते तो क्या होता है, अगर मैं आके खड़ी होती हूँ तो आप नहीं जा पाओगे, पहले ही जाना होगा. So this is the that you can avoid the starvation. Okay, thus a lock request will never get blocked by a lock request that is made later. फिर ये क्या होगा कि मुझे मेरे बाद आए हुए लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगी. Any doubt? Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. Okay. Okay, is it clear now? Is it clear now? Yes, ma'am. ओके, सी, तो यहाँ पे स्टारवेशन अवॉइड करने की दो प्रोसीजर दी गई है. दो प्रोसीजर कौन सी है? अगर आप लोगों को लॉक के लिए अप्लाई करना है तो ऑलरेडी वो डेटा आइटम कोई ऐसे मोड में नहीं होना चाहिए जिससे कंफ्लिक्ट हो. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर लॉक and if I am also working on shell lock, then it is okay. If you want to apply for exclusive and I am already working on shell lock, then it is not okay. आपको exclusive के लिए अप्लाई करना है तो कंपेटिबल एक्सक्लूसिव के साथ कोई नहीं है, शेयर या एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो अगर मैं शेयर या एक्सक्लूसिव में वर्क कर रही हूँ तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपको एक्सक्लूसिव चाहिए. ठीक है, अगर आपको शेयर चाहिए और मैं ऑलरेडी एक्सक्लूसिव पे वर्क कर रही हूँ तो भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी. ठीक है, तो अगर कंपेटिबल है, फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन होल्डिंग अ लॉक ऑन क्यू इन अ मोड दैट कन्फ्लिक्ट विथ एम. कोई भी मोड जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी मोड अगर एक्सक्लूसिव हो गया दोनों में से या फिर दोनों एक्सक्लूसिव हो गए तो परमिशन नहीं देंगे ट्रांजैक्शन की, तो उनको होल्ड ही करना होगा, वेट ही करना होगा. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज आपने ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई किया तो आपको ट्रांजैक्शन ग्रांट तभी होगा जब आपसे पहले किसी ने अप्लाई ना किया हो या फिर कोई वेट पे ना हो. ठीक है, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन दैट इज वेटिंग फॉर अ लॉक ऑन क्यू एंड दैट मेड इट्स लॉक रिक्वेस्ट बिफोर टीआई. आपसे पहले अगर मैंने लॉक रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और मैं ऑलरेडी वेटिंग स्टेट पे हूँ तो मुझसे पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा परमिशन. ठीक है, इज इट क्लियर? दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर क्लियर to avoid the starvation. So this could be one of the question. How can you avoid the starvation? Then you have to write these two conditions. By these two conditions, we can avoid the starvation. Okay, fine. Yeah. So
Next thing is the two-phase locking protocol. Now log based protocol में एक protocol है two-phase locking protocol. ठीक है? Let us see what is two-phase locking protocol. Okay, fine. So now what I can say is एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है, ठीक है, कि इस लॉक में कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होगी होगी एंड होगी ही होगी, कंपलसरी, मैंडेटरी. ओके, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है? टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. ओके, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में दो फेजेस है. कौन से दो फेजेस है? फर्स्ट वन इज ग्रोइंग फेज, सेकेंड वन इज श्रिंकिंग फेज. इन ग्रोइंग फेज यू कैन से a transaction may obtain lock but may not release any lock. Okay, it will obtain lock but it cannot release lock. तो जब भी आप लॉक x या लॉक s लिखते हो लाइन में तो दैट इज ग्रोइंग फेज. लेकिन जब आपका अनलॉक आ गया तो वो ग्रोइंग फेज वहीं पे खत्म हो गया. जब तक लॉक आता है तब तक ग्रोइंग फेज होता है, जब तक लॉक नहीं आता तब वो खत्म हो जाता है. ठीक है. सेकेंड फेज इज श्रिंकिंग फेज. श्रिंकिंग फेज, श्रिंकिंग फेज क्या है? ट्रांजैक्शन में रिलीज लॉक बट ट्रांजैक्शन में नॉट ऑब्टेन लॉक. जब तक अनलॉक आता है तब तक वो श्रिंकिंग फेज में है, लेकिन एक बार उसमें अनलॉक में से लॉक आ गया उसके बाद, अनलॉक के बाद, तो वो श्रिंकिंग फेज में नहीं रहेगा, वो ग्रोइंग फेज में फिर चला जाएगा. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर. सी, लेट्स से दिस इज वन ट्रांजैक्शन. लेट्स से दिस इज वन ट्रांजैक्शन. ओके, now let's say this is growing phase, this is growing phase, this is shrinking phase. okay, जब तक मेरे ट्रांजैक्शन में लॉक आता रहेगा तब तक वो ग्रोइंग फेज में होगा. एक बार अगर मेरे ट्रांजैक्शन में कोई ऑपरेशन विद अनलॉक आ गया तो वो किस में चला गया? श्रिंकिंग फेज में गया. ओके, इज इट क्लियर? दिस आर द टू प्रोटोकॉल, टू फेजेस ऑफ टू फेज लॉकिंग सिस्टम. ओके, ग्रोइंग फेज कब आएगा? जब तक लॉक रहेगा. श्रिंकिंग फेज कब आएगा? जब तक अनलॉक आएगा. ठीक है, वी विल सी विथ एग्जांपल. द प्रोटोकॉल ensures serializability. It can be proved that the transaction can be serialized in order of their lock points. Now let us see lock point क्या है. Lock point is a point in the schedule where you can say where the transaction has obtained its final lock. ठीक है, फाइनल लॉक से मेरा मतलब क्या है? ग्रोइंग फेज में जो लास्ट लॉक होगा वो फाइनल लॉक कहलाएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लॉक पॉइंट. अगर मेरे ट्रांजैक्शन में लॉक ए, लॉक बी, लॉक सी ऐसे लॉक आ गए तो मेरा लास्ट फॉर एग्जांपल है लॉक जी. ठीक है, तो फिर लॉक जी है वो मेरा क्या हो जाएगा? लॉक पॉइंट हो जाएगा, फाइनल लॉक, क्योंकि जी के बाद कोई लॉक नहीं होगा, सारे अनलॉक होंगे, मतलब वो श्रिंकिंग फेज में चला गया. ठीक है, दैट इज लॉक पॉइंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यू गेट इट? एनी डाउट हियर? Any doubt here? No? Okay, fine. Okay. So now let's see the example. कल हमने एग्जाम्पल देखा था T3, T4, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4 एंड ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, राइट? Now let us see that example. For example, transaction 3 and transaction 4 are two phases. Let us see this. See, why it is said that transaction 3 and transaction 4 are two phases? Because here, after completing the lock, here is lock X, then again here is lock XA, then unlock B, unlock A. Okay, so here what is the situation? पहले लॉक आके खत्म हो गया. ठीक है, फर्स्ट लॉक एक्स बी, देन लॉक एक्स ए. तो ये क्या हुआ? लॉक एक्स ए, उसके बाद कोई लॉक ऑपरेशन नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे लॉक पॉइंट.
ओके फॉर फाइनल लॉक, दिस इज द फाइनल लॉक, सो दिस इज अवर लॉक पॉइंट। ओके, उसके बाद अनलॉक में चला गया, तो इसको टू फेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक फेज है ग्रोइंग फेज और एक फेज है श्रिंकिंग फेज। ओके, नाउ सी सेम वे हियर, हियर दिस इज ग्रोइंग फेज, lock SA, lock SB, and then it is shrinking phase, that is unlock A, unlock B. So transaction T3 and T4, this both are two-phase locking protocol. But transaction T1 and T2 are not two-phase. Why it is not two-phase? See here, it is lock XA, fine. It is unlock B, fine. But after unlock, we are again getting one lock phase. After unlock, we are again getting one lock phase. तो वो growing phase नहीं हुआ, यहाँ पे टूट चुका है वो, तो वो ग्रोइंग फेज नहीं हुआ। ठीक है, सो वी कैन नॉट से दिस इज इन टू फेज वर्किंग प्रोटोकॉल। हियर सेम, सी लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, सो दिस इज ऑल्सो नॉट टू फेज प्रोटोकॉल। टू फेज प्रोटोकॉल कब आएगा कि सारे लोग एक साथ शुरू होके खत्म हो जाए, उसके बाद सारे अनलॉक शुरू होके खत्म हो जाए। दिस वी कैन से is growing and shrinking protocol, that means two phase working protocol. Okay, is it clear? ट्रांजैक्शन वाला एग्जांपल समझ में आ गया? anyone any doubt here? No doubt? Fine. Okay, now see, let us take example of T5, T6 and T7. Okay, now here in T5, T6, T7, what it is said, see first here, this is lock XA, fine, lock SB, fine, unlock A, fine. So this is two phase protocol, two phase locking protocol, yes, क्योंकि लॉक के बाद अनलॉक आया लेकिन उसके बाद लॉक नहीं आया, तो दिस इज ग्रोइंग फेज, दिस इज श्रिंकिंग फेज एंड दिस इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। सेम वे इधर भी है, लॉक के बाद सीधा अनलॉक आ गया, इधर सीधा लॉक किया आया, तो ये सारे टू फेज वर्किंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, नाउ लेट अस से अगर T5 इसके बाद 7 ने रीड A कर दिया, उसके बाद अगर T5 ने बोला कि मैं अबॉर्ट हो चुका हूँ, if it fails or if it get aborted, then we need to roll back T6 and T7, both the transactions, right? According to cascading rollback. This was the topic we saw on Monday, right? Cascading rollback. अगर T5 transaction fail हो गया तो T6 और T7 को भी rollback होना पड़ेगा. Why? Because it is dependent on T5. Fine. So this is cascading rollback. So here you can say two-phase locking does not ensure freedom from deadlock. Why? क्योंकि इसको कास्केडिंग के हिसाब से हमने समझा है, दैट मीन्स कि वो डेडलॉक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो डेडलॉक नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए एक और चीज आई है, ठीक है। यू कैन से दैट दिस कास्केडिंग रोलबैक कैन बी अवॉइडेड। हाउ इट कैन बी अवॉइडेड? बाय मॉडिफाइंग टू फेज लॉकिंग कॉल्ड स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग वन न्यू टर्म, दैट इज स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. By using this kind of protocol, we can avoid cascading rollback problems. How? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? It requires not only that to be held until that transaction commits. Okay, जब तक transaction commit ना कर ले, तब तक उसको exclusive mode में lock रहना है. Here a transaction must hold all its exclusive locks till it commits or abort. Okay, how can we say that? यहाँ पे आपने अनलॉक कर दिया, वो अनलॉक नहीं करना है। जब तक ट्रांजैक्शन यहाँ पे या तो कमिट या अबॉर्ट नहीं आ जाए, तब तक आपको अनलॉक नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने अनलॉक कर दिया, T5 ने अनलॉक कर दिया, तो T6 is using it. Okay, if T5 will write here commit and abort and then it will unlock, then it's okay if they use it. ठीक है, तो जब तक पूरी प्रोसीजर खत्म ना हो जाए तब तक अनलॉक नहीं करना है। ठीक है, अगर ये लॉक रहेगा, कल हमने क्या देखा कि एक्सक्लूसिव लॉक है, तो ये अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो ये इसको लॉक नहीं कर सकता।
कोई भी मोड में लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब ये कर ही नहीं सकता तो इसका ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। सेम वे अगर ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक कमिट या अबॉर्ट ना हो जाए तब तक हमें अनलॉक नहीं करना है। इट विल होल्ड द ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट अनलॉक द ट्रांजैक्शन, ओके। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, strict two phase locking, okay. Now see some another we are having one another variant of two phase locking, that is rigorous two phase locking. Rigorous two phase locking, it is even stricter. Why? Here all locks are held till commit or abort, okay. यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो एक्सक्लूसिव लॉक है उसको ही होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे थ्योरी में लिखा भी है, देखो एक्सक्लूसिव लॉक, ओके, उसको ही हम होल्ड करके रखते हैं। लेकिन रिगोरियस टू फेज लॉकिंग क्या करता है, वो एक्सक्लूसिव हो या शेयर्ड हो, कोई भी मोड पे क्यों ना हो, वो उसको होल्ड करके ही रखेगा, ठीक है। अगर ये शेयर मोड में है तो भी ये उसको शेयर मोड में एक्सेस नहीं कर सकता, ये उसको शेयर मोड में एक्सेस नहीं कर सकता इफ इट इज इन शेयर मोड। अदरवाइज हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर शेयर मोड में है और किसी को शेयर मोड में एक्सेस करना है तो हम उसको करने देंगे। हमारा कंसेप्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल का यही है, राइट। बट रिकरियस क्या बोलता है, इट इज इवन स्ट्रिकर। वो बोलता है अगर शेयर मोड में भी है तो भी आई विल नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू यूज दैट लॉक, टू यूज दैट डेटा आइटम, ओके। You got what is strict lock based and rigorous lock based protocol in two phase? Any doubt here? Fine. So let us move to the next. Now here we have an example. Here we are seeing an example. Consider the following two transactions for which we have shown some of the significant read and write operations. ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, यार some of the read and write operations. Okay. So यहाँ पे T8 दिया गया, यहाँ पे T9 दिया गया। इसमें क्या बोला है, read 1, read 2, जितने भी डेटा A1, A2 up to AN, then you can write it. उसके इन्होंने write T9 में sorry, your voice is not clear. hello, Your voice is not clear, ma'am. can you please write it? My voice is not clear. Okay, just a second, hold on. Hello, is it clear now? Is it clear? No, ma'am. No? No, ma'am. Okay, okay. Just a second. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Sorry for network issue. Yeah. So here we are considering two transactions, that is T8 and T9. In T8 transaction, what is the thing? पहले सारे read होंगे, उसके बाद write होंगे. Here, okay. What we are doing here, read A1, read A2, जितनी भी data items है पहले हम उसको read कर लेंगे. At last we are going to write the data item, right? And here in T9 transaction, what we are doing? We are reading A1, reading A2, and then we are displaying result of A1 plus A2. Okay. Now see. If we employ the two-phase locking protocol, then T8 must lock A1 in exclusive mode.
अगर हम टू फेज प्रोटोकॉल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए कि फर्स्ट बिफोर रीडिंग दिस थिंग दे नीड टू लॉक A1 इन एक्सक्लूसिव मोड, राइट? अगर ये लॉक नहीं होता है तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये दोनों कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो, ठीक है? इसीलिए क्या बोला गया कि फॉर टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल फर्स्ट यू नीड टू लॉक A1 इन एक्सक्लूसिव मोड so that the changes does not affect here. Okay, then it is said therefore any concurrent execution of both transaction amounts to a serial execution. अगर लॉक हो जाएगा दैट मीन्स कि वो सीरियल एग्जीक्यूशन में जाएगा, फिर जब तक ये अनलॉक नहीं होगा तब तक इसका प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये सीरियल एग्जीक्यूशन हो जाएगा, पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये कंप्लीट होगा, ठीक है? अभी तो दोनों पैरेलल वर्क कर रहे हैं, now right now they are both are working concurrently. Okay, notice however that T8 needs an exclusive lock on A1 only at the end of its execution when it writes A1. Okay, now what they are saying that while reading A1 they don't need to put exclusive lock there, they just need to write exclusive lock here while reading A1, while writing A1, sorry. ओके तो इसमें क्या बोला गया है, जब वो राइट करेगा तभी हमें उसको एक्सक्लूसिव लॉक करना है, वरना नहीं करना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होगा, अगर एक बार हमने एक्सक्लूसिव लॉक कर दिया A1 को तो ये उसको रीड भी नहीं कर पाएगा। अगर शेयर्ड लॉक है तो ये उसको रीड करेगा, तो दोनों उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक हो गया उसके बाद ये उसको रीड भी नहीं कर पाएगा, तो इतने टाइम A1 there exclusive lock getting the answer where writing this here. Okay, Ma'am, your voice is not clear. हो गया है। Oh, okay, a minute. Hello, am I clear? Hello, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am, now it's clear. Okay. Okay, we will do one thing. I will repeat this whole topic in tomorrow's lecture also. Okay, so if you miss some of the topics, then we can cover it, some of the points. Sorry for the network issue as of now. Yeah. So T8 एंड T9 में हमें क्या बोला गया है कि रीड करते वक्त आप एक्सक्लूसिव लॉक मत लगाइए, राइट करते वक्त लगाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लग गया दैट मीन्स T9 कैन नॉट रीड A1, ठीक है? तो तब आप अगर हो सके तो आप शेयर लॉक लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉक SA1, और यहाँ पे राइट करते वक्त हम क्या लिखेंगे, लॉक X, एक्सक्लूसिव लॉक हम राइट करते वक्त लगाएंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? I hope. Hello, am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Hello, can you please write in? Okay, okay, thank you.
Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I'm sorry for this network issue. I tried to resolve it, but I don't know what is the problem. And uh, yeah, yeah. So what we did here, first our lock was in shared mode while reading A1, because if it is in share mode, then T9 can also read that lock, right? Then while writing A1, we converted our lock from shared mode to exclusive mode so that we can write it. Okay. So here if you have noticed that this can be the question that explain the protocol in which lock conversation is allowed. So which is the protocol in which lock conversation is allowed? That is two-phase locking protocol. Here we are allowing conversion. Okay, lock conversion. We shall provide a mechanism for upgrading a shared lock to an exclusive lock and downgrading an exclusive lock to a shared lock. Whenever we are converting from shared lock to exclusive lock, like we did here, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे किया शेयर टू एक्सक्लूसिव में हमने कन्वर्ट किया, that is called upgrading. That is called upgrading. And if we convert exclusive lock into share lock, the concept of upgrading and downgrading in lock, if shared lock is converted into exclusive lock, it will be called upgrading. If exclusive lock is converted into shared lock, it is called downgrading. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay. I will explain this topic in next lecture also, because I think due to network issue you might have missed 1 to 2 points. Okay. So this is our point. Rather, upgrading can take place in only the growing phase, whereas downgrading can take place only in shrinking phase. How we can say that? Growing phase में क्या होता है? सिर्फ lock होता है, right? So we can say that growing phase is upgrading, और shrinking phase में क्या होता है? Unlock ही होते हैं, सारे unlock होते जाते हैं lock, right? So we can say that shrinking phase is downgrading. Okay, we have compared here both the names. Now see, here we are talking about lock conversion. Okay, so first phase is in two-phase locking protocol with lock conversion. First phase is can acquire a lock S on item. कोई भी डेटा आइटम में हम लॉक S यानी कि लॉक शेड लगा देंगे, ठीक है. कैन अक्वायर अ लॉक X ऑन आइटम, और वही डेटा आइटम में हम लॉक X यानी कि लॉक एक्सक्लूसिव लगा देंगे वही डेटा आइटम में, ठीक है. देन कैन कन्वर्ट लॉक S to lock X, then we can convert lock S to lock X. This is called upgrade. This is called upgrade. This is first phase. Okay. What is second phase? Second phase is we can release a lock S. Shared lock को release करेंगे. We can release lock X. Exclusive lock को हम release करेंगे. And then we can convert a lock X to lock S. Exclusive lock में से हम shared lock में उसको convert करेंगे, which is called downgrade. Okay. So here we are locking, we are acquiring lock, so we are calling it growing phase. Here we are releasing lock, so we are calling it shrinking phase. Okay. This protocol assures serializability, but still relies on the programmer to insert the various locking instructions. There would be different locking instructions from the programmer as per his needs. Okay, whatever program he is performing, he would need different locking protocols, or you can say locking instruction. So it still depends on programmer. But this is our lock conversions. Sorry. Yeah. Now, next thing is implementation of locking. What is implementation of locking? Here in implementation of locking,
First, there is one lock manager. What will lock manager do? It will reply to the process of lock request. Okay, अगर आपने किसी डेटा आइटम के लॉक के लिए रिक्वेस्ट रखी कि मुझे ये डेटा आइटम इतने टाइम के लिए चाहिए एक्सक्लूसिव मोड में, तो लॉक मैनेजर डिसाइड करेगा if they grant you this request or if they reject your request. Okay, so a lock manager can be implemented as a separate process to which transactions send lock and unlock request. लॉक मैनेजर को हम अलग से रखेंगे जिसको ट्रांजैक्शन लॉक की रिक्वेस्ट और अनलॉक की रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. ठीक है. लॉक मैनेजर रिप्लाइज टू अ लॉक रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग अ लॉक ग्रांट मैसेज. If lock manager want to grant you permission, then they will reply to your request. Okay, they will reply to your request that lock granted, or a message asking the transaction to roll back in case of deadlock. If it is performing any kind of deadlock, then they will reply you to roll back. ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट फिर रोल बैक हो जाएगी, फिर आपको फिर से थोड़ी देर बाद उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. जब तक आपकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होती, आप you will request for the lock. Okay, the requesting transaction waits until its request is answered. जब तक आपकी रिक्वेस्ट आंसर नहीं होती तब तक you are doing, you are waiting for the answer. Okay, the lock manager maintains a data structure called a lock table to record granted locks and pending requests. Here what lock manager will do, lock manager will maintain one kind of data structure. In that data structure, you will be having some record, whose request is granted, whose request is pending, who has sent the request, who is in waiting form. This all things will be there in lock table. Okay. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Yeah. So this will store one lock table. The lock table is usually implemented as an in-memory hash table indexed on the name of data item being locked. ठीक है. अब lock table क्या करेगा? Let us see here. Okay, this is lock table. Okay. Whenever any new transaction, here we are having index 7, index 9, 12, index 4, index 144. अगर कोई नई इंडेक्स आया लेके, अगर आप लोग आए कि मुझे ये करना है, तो आपको ये लिंक लिस्ट में आपको ऐड किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं कोई नई रिक्वेस्ट जो भी आती है. नाउ दिस ब्लैक rectangles are called granted. Why granted? If their request is granted, we are filling this with black color. Okay, and white color box will be in waiting mode. Okay, so you can see here. Now if someone wants to join the request from I7, आपके अंडर में से किसी को ज्वाइन करना है और उसके बाद किसी को ट्रांजैक्शन करना है, तो they can also do it. Now for example, let's say I want to include I8 in from 912, तो मैं क्या करूंगी, 912 से I8 में इंक्लूड कर दूंगी. यहाँ पे सेम एक बॉक्स यहाँ पे ऐसा बन जाएगा. ठीक है, I7 की रिक्वेस्ट है, ट्रांजैक्शन 23 की रिक्वेस्ट है, वो ग्रांटेड हो चुकी है. It is granted, it is performing. See, here also it is performing, here also it is performing, but here T23 is in waiting mode. Okay, so all these things are taken care by lock manager. किसको grant करनी है permission, किसकी permission roll back करनी है, किसकी permission reject करनी है, this depends on lock manager. और वो कैसे डिपेंड करता है, कौन पहले आया और किसको क्या रिसोर्स चाहिए, उस हिसाब से. ठीक है, so here I7 came first, यहाँ पे I7 पहले आया, तो पहले I7 को रिक्वेस्ट ग्रांट की, उसके बाद I912 आया, तो उसको रिक्वेस्ट ग्रांट की. ठीक है, so here you can say black rectangle indicate granted locks, white one indicate waiting request. Okay, it is said here, see, it is written here, granted and waiting. Now lock table also records the type of lock granted or requested. Okay, lock table will keep the record कि किसको हमने ग्रांट किया, किसने हमें रिक्वेस्ट किया, ये सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा, लॉक टेबल के पास. ओके, न्यू रिक्वेस्ट इज एडेड एट द एंड ऑफ द क्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द डेटा आइटम एंड granted if it is compatible with all the earlier locks.
Now, whatever will be the new request, we will add that request here. And we can grant the request. Lock manager can grant the request if it is compatible with other data items. If it is compatible, share mode में है, then we can grant permission. Unlock request result in the request being deleted and later requests are checked to see if they can now be granted. Unlock request क्या करेगी? Unlock request will be deleted, okay? या फिर उसको वेट पे जाना होगा या फिर वो डिलीट पे जाएगा. अनलॉक रिक्वेस्ट है वो, ठीक है. If it is deleted, if they can and later request can check to see if they can now be granted or not. Right now I cannot grant this T23, so T23 have to wait. और थोड़ी देर बाद T23 फिर से चेक करेगा. Now permission can be granted or not. Okay, after completing all other resources here, it will check whether now the permission will be granted to me or not. Okay. Sorry. If transactions abort, all waiting or grant requests of the transaction are deleted. Now see, कोई एक transaction abort हो गया. Let me say here, यहाँ पे T1 abort हो गया, ठीक है. तो उसके साथ जितने भी waiting में थे वो सारे transactions delete हो जाएंगे. अगर ये abort हो गया तो इन दोनों को भी abort होना पड़ेगा. This concept we saw here, we saw that concept here, right? कि अगर T5 abort हो गया तो T6, T7 को भी rollback होना पड़ेगा because it is dependent on T5, right? So same way you can say that here T8 and T2 both are dependent on T1, transaction 1. So if transaction 1 is aborted, then transaction 8 and transaction 2 both will be deleted or you can say aborted. Okay. Lock manager may keep a list of locks held by each transaction to implement this efficiently. So lock manager क्या करेगा? पूरे लॉक की लिस्ट रखेगा कि कौन कहाँ से compatible है या नहीं है, वो सब चेक करने के लिए. Okay, this is lock table. Is it clear? Is it clear? Lock table clear? Yes. Okay. Any doubt till now? Any doubt? Okay, see, do one thing. Right now we are ending our lecture here. But do one thing. In all the batches, I have informed you to enroll into the course for Oracle Academy. Okay, do that. If you have any doubt, you can ask me and complete it as soon as possible. You need to upload your practical 1, 2, 3, as I said, in lab. And in next lecture, remind me to repeat this topic. Okay, due to some network issue, I was not able to continuously connect to the call. So in next lecture, you need to remind me this thing.